and let me share my screen. Okay, so today, right, we are actually going to start our topic, right, which, right, conceptually or in terms of DevOps, right, or in terms of general practice also, we call it configuration management, right, and we are learning a tool, right, which is related to configuration management, and therefore we call them to those tools like, configuration management tool. So directly jumping to Ansible, first we need to understand the fundamentals. Okay, so when I say fundamentals, so first of all, right, I want to understand from you, right, so how you will define uh, these two terminologies, right, configuration as a code and infrastructure as a code. Anyone? What could be the difference between them? Okay, now let me put this question in different perspective. uh, you are, right, going to start, say, your own company, and you are going to start something, right, in retail business. Maybe you are going to sell, right, a product related to, right, uh, you can say beauty products, right, which are natural, right, so organic beauty products. So some you, right, created something called, right, naturalbeauty.com, whatever, right. Now you have this idea, right, in your mind, and you want to start your company. So you want to do, right, either C2B, right, matlab, back end to customer or customer to customer kind of, right, design, matlab is tarah ka hai plan. So obviously you will write your product, right, you will engage with your aggregators, whatever you will do, right, regarding that. And at the end, right, you have to, right, reach to customers. So to reach to customer, you will need certain, right, servers, right, or you can say machines, right, in your environments, production environment, which, right, customer would be accessing. तो ये आपका प्लान है, बट इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अगर ये आपको प्रोडक्शन पे, राइट, आपको सेटअप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या इनिशियली क्या करोगे सबसे पहले? एनीवन? आप घर पे तो दो चार लैपटॉप पे तो बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे, राइट? चार लैपटॉप खरीद लिया और उसको, राइट, इंटरनेट से कनेक्ट करके करे, ऐसा नहीं हो पाएगा, राइट? यू विल गो फॉर व्हाट? सम डाटा सेंटर, करेक्ट? यस और नो? मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ, पहले तो मुझे कंफर्म करना है, राइट? ओके, सो ओके, Yes. so obviously you will, right, look for a data center, or you might, right, look for a public cloud, right, in which you can create your own, right, virtual, right, data center, right, that is VPC, and there, right, you will start thinking of, right, doing some product related, right, component building. तो आपको वही, आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप का करने का लाइफ साइकिल करोगे, और एक जगह पे आप VPC पे अपने कुछ इंस्टेंसेस लोगे, सर्वर लोगे, और वहां पे आपका, राइट, सेटअप करोगे। तो ये सब चीज आप मैनुअली तो नहीं करोगे, राइट, इन सब के लिए आप ऑटोमेशन करोगे। तो ऑब्वियसली आप, हमने बहुत सारी चीजें देख ली, राइट, जैसे गेट पे हम कोड लिखेंगे, फिर उस पे कमिट करेंगे, हमारा जो भी फ्रंट एंड कोड होगा, राइट, वो सर्टेन इन्वायरमेंट्स में डिप्लॉय होगा, टेस्ट होगा, और उसके बाद आप प्रोडक्शन पे डालोगे। नाउ व्हेन आई से प्रोडक्शन पे भी डालोगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका रिसोर्सेज को प्रोविजन करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में ना, आपको VPC नेटवर्क बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद, राइट, आपको रेस्पेक्टेड नेटवर्क में रिलेटेड जो सब कंपोनेंट्स है, राइट, वो बनाने पड़ेंगे, राउटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, सबनेट्स बनाने पड़ेंगे, है ना? तो आपके, राइट, नेकल फिल्टरिंग बनानी पड़ेगी, कौन एक्सेस करे, कौन नहीं करे, किस पोर्ट पे हम, राइट, इंग्रेस करें, इग्रेस करें, ये सब चीजें आप करने की कोशिश करोगे। Now, when you're dealing with your infrastructure resources like creation of machine and all those, right? Generally, at that time, you call it what? Infrastructure as a code. You're writing a code which will create the infrastructure, right? That is what infrastructure as a code. But when you have to configure, right, the components of those infrastructure, right, or application which are installed in those, right, infrastructure, then you are doing what? Configuration as a code. So you are changing the configuration as per the need. It's true. ये समझ में आया भी मैं जो डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड और कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड पे? प्रोविजनिंग करना इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड का पार्ट है। Or while doing an infrastructure as a code, you will also be doing, right, configuration,
right? As a code, you will be configuring your infrastructure or your resources so that they can work, right, as you want. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जो मैं बोल रहा हूँ? यस और नो? नहीं है तो पूछो क्वेश्चन. दीपक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सप्लेन करोगे? ओके, जैसे आपने एक सर्वर इंस्टॉल किया, ठीक है, आपने एक सर्वर इंस्टॉल किया, आपने क्या ओके। प्रोविजन किया, आपने सर्वर क्रिएट किया, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, राइट? आपने सर्वर टाइप किया क्या, T2 माइक्रो, राइट, विथ दैट मच ऑफ रैम, जो आपने लिया, ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग हुआ ना बेसिकली. नाउ अभी आप उस पर एक एप्लीकेशन रन करने वाले हो, और एप्लीकेशन रन करने के लिए यू नीड सर्टन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन. फॉर एग्जांपल, आपका फाइल रीड ऑपरेशन ज्यादा है, तो आपको सर्वर के कुछ कॉन्फ़िगरेशन ट्विक करने हैं, राइट? फाइल डिस्क्रिप्टर्स बढ़ाने हैं, राइट? और राइट जो वर्चुअल मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए कुछ वहां पे राइट चेंजेस डालने. तो वो जो चीजें कर रहे हो आप, जो सर्वर साइड जो कॉन्फ़िगरेशन आप जो कर रहे हो, राइट, वो किस में आ जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा, राइट? आप सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो प्रोविजन करने के बाद. तो दैट इज व्हाट कॉन्फ़िगरेशन इज अ कोड. एंड अनदर गुड एग्जांपल वुड बी, आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया उस सर्वर पे, और उस एप्लीकेशन के लिए अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन डालने हैं, राइट, कि एप्लीकेशन सही से चले, दैट इज आल्सो व्हाट कॉन्फ़िगरेशन इज अ कोड. Now you understood the thin line of difference. Provisioning is more Yes. related to infrastructure as a code, and changing the configuration of the resources is more related to what configuration is a code. Right? Clear? Yes. Yes. Now we generally use right infrastructure as a code as a combination, है ना? हम जब infrastructure code बोलते हैं तो हम अंदर से ये भी बोल रहे होते हैं कि भाई मैं configuration code भी कर ही रहा हूँ, क्योंकि उसी का पार्ट हो जाता है वो. But there is a difference, right? So obviously you have to think in that line. जब आप provision कर रहे हो, provision is not basically right configuration. Provision is something else and configuration is something else. Now this configuration management tools have that capability, right? So they can do provisioning, they can do right configuration, right, of your resources. So this is one of the right you can say base feature, right, that you will look into any configuration management tool. Second thing that you will look, right, they should be capable of deploying your application also. अगर डिप्लॉय करेंगे तभी तो कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे, करेक्ट? तो डिप्लॉयमेंट भी राइट इज अ फीचर ऑफ व्हाट योर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल. एंड एट द एंड राइट दे वांट टू ऑर्केस्ट्रेट व्हाट योर सर्विसेज. जो आपने डिप्लॉयमेंट किया वो चलना भी तो चाहिए, उसको अप करके ला के राइट एक रनिंग स्टेट पे भी तो लेके आना है. सो दैट इज नॉन एज व्हाट service orchestration. So these are the three main important aspects, right, that any configuration management tool should have. Now any question on this part? So when you will look for or evaluating configuration management tool, these are the three right basic things that there should be in a configuration management tool. Okay. Now let's take an example, right? Ansible, and let's do a comparison also, right? जो हम Terraform तो इसके बाद करेंगे, Terraform का right thought and concept थोड़ा अलग है, right? Ansible से, but कुछ basic differences हम identify कर लेते हैं. Can anyone have an idea, right? What could be the difference between Ansible and Terraform? Both are configuration management tools. Ansible having a Uh, push mechanism and Terraform having pull mechanism. Again, Vishal, can you repeat it again? I missed some part. Ansible having the push mechanism and Terraform having pull mechanism. Uh, no, I would not say. Even Terraform also do push. You are talking a different right segregation. That is basically Chef versus Ansible, or Chef versus right Ansible Terraform. Okay, or Chef-like tools like Chef Puppet, which right needs an agent, right, somewhere, Right. and agents do the pull. But basically, right, Ansible, Terraform, they are agentless in nature. Okay. Terraform is also agentless. Yes, it is also agentless. What you do, you run, right, you install in one machine where Terraform should be there. After that, you do what? Give the provider and you directly connect, right? And obviously the plugin or APIs do the everything. You don't need anything to be installed in the remote machine, which is Terraform client. आपको Terraform client डालने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, विशाल? Now, Sonia, you want to add something?
Terraform is the infrastructure as a code, and for Ansible we can use it is for the configuration also. Means we can integrate Ansible in the Terraform also. If means infra also we can build via Terraform, and in that if we are integrating Ansible for the configuration management. Yes, actually, I want to hear this, and therefore, right, I want to say, right, it's right, very difficult to say, right, what you said actually, but it is true, right? The Terraform is more aligned toward provisioning, right? Which provisioning, right, it is capable of doing what? Also configuration changes, but it is not meant, right, or not that efficient in terms of doing that. I would say that Yes. Ansible on other hand, right, can also do provisioning, but it is not efficient like Terraform to do provisioning, right? But it is very good in terms of, right, doing configuration changes, or pushing configuration changes, making configuration changes. So obviously now here you can, right, correlate. So Terraform is more aligned toward infrastructure as a code, and Ansible is more aligned toward what? Configuration as a code. Second important thing, Terraform is declarative in nature, and Ansible is what? Procedural in nature or imperative in nature. You got this point, right? This is important thing, right? So when I say, right, declarative in nature, it means already the API services which are written, right, will do, right, lot of the activities in which in Ansible you have to plan it, right? You have to plan in terms of what? Writing certain part of actions, right, so that procedurally they will execute and yet give you the output. So it's not completely imperative, but imperious in nature, more related to the, more on the side of imperativeness. This is again, right, a major, right, a difference that you can see. Beside that, they are both configuration management too. They can do, but the efficiency will be calculated out there, right? So generally, Terraform thinks that I don't want, when I am doing, right, infrastructure and right, configuration changes, it should be the tools capability to do everything, to deal with, right, all the aspects, rather than, right, being on one side, right, approach of doing only configuration, which is Ansible very close to. So that is what where Terraform, right, changes, and therefore it is capable of, right, doing multi-cloud, you can say the providers that they are integrated, they can deal with infrastructure as a service providers, they can deal with platform as a service provider, they can deal with software as a service provider. So they are that much integrated, but Ansible would not be, right? For that, either you have to write custom modules to achieve that, right, or there would be very limited, right, in terms of provisioning, right, in different PaaS, SaaS, and, right, IaaS. This is what, right, the differences that you should always think. Both are agentless in nature, right? uh, Ansible, you need only Ansible master. It needs an inventory to, right, place these changes. Terraform at the end, right, is again, right, you need one machine with, right, Terraform, right, installed, right, and whatever you define the providers, it just try to connect to that provider, and whatever resources it can directly, right, do that. You don't need, right, some sort of, right, client, right, which will talk to you, right, talk to the Terraform server, basically, when I say you, and to do the, right, activity. So these are the few things that we should also, right, keep in mind, right, when, right, working on this tool. And we will do, while doing lab, right, we will also, right, observe that. Now coming to a standard thought process while, right, building a configuration management tool. So at this time moment, right, you can think of any configuration management tool. I'm not talking in terms of Ansible right now, okay? So when I say for I want to create a configuration management tool, I want to develop a configuration management tool. So where I would start with, so I will start with, right, identifying some technology that I will use to build a configuration management tool. ना मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ तो चूज करूंगा ना, जिससे कि मैं अपना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल डेवलप करना शुरू करूं. एंड आई विल टेक राइट एग्जांपल ऑफ बोथ, राइट, एंसिबल एंड टेराफॉर्म टुगेदर. तो मैं अगर टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ और कंपेयर करता हूँ, जब किसी ने टेराफॉर्म बनाया होगा या एंसिबल बनाया होगा, तो उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी सोचा होगा. कोई मुझे बता सकता है कि एंसिबल ने कौन सा यूज किया है? एंसिबल इज रिटन इन विच लैंग्वेज? Go. एंसिबल इज रिटन इन पाइथन, ओके. एंड टेराफॉर्म, टेराफॉर्म ने कौन सा लैंग्वेज लिया, जो विशाल ने बोला, राइट, गो. टेराफॉर्म जो कोर है, इट इज रिटन इन व्हाट?
गो लैंग्वेज। तो ये तो बेस टेक्नोलॉजी है जो क्या है। ओवर दैट what they give you, over that they give you right pre-created module so that I don't have to code much. आप क्या करते हो, वो मॉड्यूल को यूज करके आप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग या कॉन्फ़िगरेशन कोड करते हो। तो जैसे मैं इसको बोलूंगा मॉड्यूल्स। तो अभी मॉड्यूल्स अगर मैं एंसिबल की तरफ देखूं तो एंसिबल के साइट पे जाते हैं। ठीक है, मैंने एंसिबल मॉड्यूल इंडेक्स टाइप किया और ये पेज पे गया, देखो। तो ऑलरेडी एंसिबल ने क्या किया हुआ है आपके लिए। जैसे आप एंसिबल इंस्टॉल करते हो तो यू आर राइट रेडी टू यूज दिस right many numbers of models which I will show you now. My internet would be slow guys because I am connected through mobile. No internet today. Okay, now you can see right they have classified. There are storage modules, there are system modules, there are cloud modules, right? There are command modules, right? These all modules are written is something like a pre-written code. You just have to write use those modules. Now let's click on all modules so that we can see how big the list is. So if you see the scroller out here, right, which I am right moving, right, you can see right it is so small. So there's so many right modules already written. Right? Now take an example of one module. So for example, I will use a basic module, say command module. Okay, I will search for command module. C पे आना चाहिए, C पे लेके चलते हैं। COLMNO हम लोग command module उस पे लेके भी कर सकते थे। MNO, yeah. See, this is a command module, right? If I click on command module here, the documentation right is good, right? Comparative to Terraform, I see right Ansible documentation is far much better. So here the command module takes the command name followed by a list of space delimited arguments, right? Obviously command is what? For example, if I want to check my disk space, मेरा command क्या होगा? df minus h होगा, राइट? तो अगर मुझे ये किसी 10 रिमोट मशीन पे रन करवानी है, राइट, एंसिबल क्या करेगा? एंसिबल कमांड मॉड्यूल यूज करेगा। तो यू हैव टू राइट कमांड, right, and pass argument like -a, that is argument which command you want to run. In double quotes you write df space -h, it will execute it for you. And these are the parameters which are inform basically inform you can use this right parameters while running. An example is also given in terms of playbook. First we will do an ad hoc command, right? We will not directly jump to playbook execution. So first we have to comfort right with Ansible ad hoc command to see right how the Ansible runs the command in remote machine, right? तो अभी देखो यहाँ पे command लिखा हुआ है, command के आगे क्या आपका ये command right दिया हुआ जो execute करेगा, ठीक है? सिमिलरली कमांड जब मैं एंसिबल रन करूंगा, नॉर्मल एंसिबल राइट रन करूंगा, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? एड हॉक कमांड की बात कर रहा हूं, नॉट प्लेबुक। तो मैं समथिंग लाइक दिस, एंसिबल right -i whatever inventory file I have, I will show you inventory file concept, and right after that my -m, that is my module name. My module name is command. So this is the command module which I showed you. It needs some argument, right? And I want to run the command called df say space -h, whatever command that I want to run, I can run. Now this command will get executed in right all the hosts, right, which I have defined in this inventory. These are the remote hosts which I have defined in this inventory in case of static. And I can also write use like all to do the execution all the hosts which are defined in inventory file, or I can use to certain specific sections that I have created. तो मैं उस फाइल में sections भी बना सकता हूँ। जैसे मेरा एक वेब सर्वर का सेक्शन हो सकता है, राइट, मेरा डेटाबेस का सेक्शन हो सकता है। तो वो फिल्टर करेगा और जितने होस्ट डीबी सेक्शन में लिस्टेड हैं उतने को ही पिंग करेगा, उतने को ही कमांड रन करेगा. सो दिस आर द थिंग्स राइट दैट वी आर गोइंग टू सी, बट आई एम टेलिंग यू दिस आर द मॉडल्स व्हिच आर प्री रिटन. आपको कोड करने की जरूरत नहीं, उसका अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए और वो अंडरस्टैंडिंग से आप राइट आपका प्लेबुक या एड हॉक कमांड्स एग्जीक्यूशन कर सकते हो. ओके, now let's come back to our diagram. So this is what I'm talking about modules and similar terms, right? अगर Terraform में देखें, जैसे मैं AWS का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है. Yeah, this is right one of the module. It's the AWS underscore instance.
ऑलरेडी आपके लिए ना रिसोर्सेज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपके जैसे ये रिसोर्स है, ये रिसोर्स में क्या आपका AWS इंस्टेंस बनाना है, आपको क्रिएट करना है, राइट, प्रोविजन करना बनाना है। तो आप क्या पास कर रहे हो, कौन सा AMI बनाओगे, क्या इंस्टेंस टाइप रहेगा और क्या है। तो ये सारी जो चीजें हैं, राइट, ये आपने मतलब पास करनी, तो आपका मशीन बन जाएगा टेराफॉर्म को। तो ये जो AWS इंस्टेंस है, ये ऑलरेडी आपके लिए कोड लिखा हुआ है, आपको उसको रिसोर्स में पास करना है और उसको पैरामीटर पास करने हैं, जिससे कि वो मशीन क्रिएट हो जाए। तो इसके अंदर में आप क्या कर रहे हो, उसको क्रिएट करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो पास कर रहे हो। तो आपको बस यही समझना है। अभी ये ऊपर में जो डाटा पार्ट है, वो डाटा पार्ट क्या है, आपको ये यूबुंटू का जो इमेज चाहिए वो उसको फिल्टर करके निकाल रहा है। तो ऑब्वियसली पहले बोल रहा है कि मेरे को AWS MI एक ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, डाटा उसको यूज कर रहा है, उसमें से फिल्टर कर रहा है कि मेरा जो इमेज नेम होना चाहिए वो यूबुंटू इमेज इस नाम का इमेज होना चाहिए, ठीक है। इसमें से ये नाम के जितने भी इमेज है वो फिल्टर करके लाएगा। उसके बाद वो बोलेगा कि मेरे इमेज का वर्चुअलाइजेशन टाइप HVM होना चाहिए, तो आपको उसमें से और फिल्टर होगा, और बाद में उसका ऑनर ये होना चाहिए, राइट, ये आईडी। तो ऑब्वियसली एक कोई इमेज आपको मिल जाएगी, और वो जो इमेज जो ये डाटा आपको दे रहा है, राइट, आप AMI को पास कर रहे हो, डाटा डॉट कौन सा नाम दिया आपने, AWS AMI Ubuntu नाम का ये है, उसका आईडी दे दो। तो आपको ये इस डेटा के आउटपुट से आपको आईडी मिल जा रहा है, जो AMI आईडी चाहिए होता है क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज nothing but what already pre-written code. You have to understand, right, the how to template and how to use it, and you will be able to write it. तो obviously conceptually अगर देखा जाए तो ये सब एक ही अप्रोच में है। तो आपके लिए क्या लिखे हैं, मॉड्यूल्स लिखे, इन मॉड्यूल को आपको समझना पड़ेगा ना। कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आपके लिए वो मॉड्यूल है नहीं, बने हुए नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप खुद के लिए, राइट, क्योंकि आपको मान लो गो आता है या पाइथन आता है, तो आप क्या लिख सकते हो, आपका कस्टम मॉड्यूल लिख सकते हो। तो कस्टम मॉड्यूल से आपको फायदा ये होगा कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको मॉड्यूल चाहिए आप वो लिखते हो। तो ऑब्वियसली देयर वुड बी डेवलपर इन योर टीम, राइट, which can create and look into, right, how we can write a custom module and use, right, with Ansible or Terraform. So there is a concept of, right, custom modules. This main modules comes with the tool, है ना, टूल के साथ आ रहे हैं। कस्टम मॉड्यूल, someone is developing this, right, custom tool as per the demand or requirement. Now over this module, basically over this module, you write or use a domain specific language. So domain specific language क्या हुआ, that is comes the infrastructure as a code or configuration as a code part. तो आप आपका IAC या CAC लिखते हो, तो ये they would be using certain DSL. तो Ansible कौन सा DSL यूज करता है, YAML। तो आप जो प्लेबुक लिखते हो वो किस में लिखते हो, YAML में लिखते हो, right, in case of Ansible. And you use HashiCorp language, that is HCL, right, in case of what, Terraform. Okay, so now this is where, right, you basically write your actual playbook, right, using this DSL. तो इस IAC के लिए आप जो टर्मिनोलॉजी, जो आपका एक्चुअल कोड जिसमें लिखते हो, राइट, उसको आप क्या कहते हो, उसको कहते हो आप, आपका जो कोड है, राइट, जिस इस DSL को यूज करके लिखा है आपका जो कोड, वो कोड को आप बोलते हो इन टर्म्स ऑफ एंसिबल प्लेबुक। और टेराफॉर्म में हम क्या बोलते हैं, config files. For Terraform these are config file, and config file contains what, the provider and resources. तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोड लिखा। ना इस कोड को आप क्या बना सकते हो, मॉड्यूलर बना सकते हो। मॉड्यूलर मतलब एक कोड लिखा है जो जिसका काम होगा, मान लो एक पर्टिकुलर रिसोर्स बनाना, और एक मेन कोड में आप क्या करोगे, सबको कॉल करोगे। तो ऑब्वियसली यू कैन यूज अ मॉड्यूलर अप्रोच आल्सो व्हाइल डेवलपिंग योर कोड. So Ansible in that term, right, use basically a roles approach, right, and in case of, you can say, Terraform, it use, right, modular approach, उसको modular approach ही बोलते हैं. But जनरली कोड कॉन्फ़िग सेपरेशन भी होना चाहिए। आपका जो कोड लिखा है उसमें हार्ड कोडिंग नहीं होना चाहिए कि आप कुछ पैरामीटर पास करोगे ना, जैसे अभी हमने टेराफॉर्म का कोड देखा, तो हमने उसमें पैरामीटर पास किया, पैरामीटर AMI पास किया, तो बट हम कहाँ से, या तो डाटा से कैलकुलेट करके ला रहे हैं, या मैंने उसकी वैल्यू कहीं पे स्टोर कर रखे है कि किसी वेरिएबल फाइल में। ऑब्वियसली दे विल बी सपोर्टेड विथ, राइट, creating variable over that. So obviously you can do a code config separation, so you can have config for your playbook, right, with generally storing variables. And using this approach, right, you can create your modular approach of programming, right, for your infrastructure and code. So modular approach. Okay, now if you think, right, so when you will
see, in terms of execution, it will start from where? From top to bottom or bottom to top? अगर आप इस पे Ansible tool को use करना चाहते हो, top to bottom. Yes, that's correct. So obviously you will start thinking from here, and right, we'll talk to right the technology to do your right provisioning or configuration management. Is this clear, guys? This is the fundamental knowledge for any configuration management tool, right, which is built, right, will be based on this thought process. Is this clear, everyone? Yes or no? If no, please ask So also. second option, that is The second option. Hello. Yeah, Rajiv, go ahead. Hello. So second option, that is config. Yeah. So any question on that? Or you want me to explain? Yes. Yes, explain. Okay, let me explain. For example, if you're writing a code, okay, and code needs right certain parameters to run, where you will put those parameters? In some config file, right? Yes, Rajiv? I cannot hard code my configuration in the code itself. ना, जैसे अगर मुझे dev में कुछ चलाना है तो मैं dev के configuration use करके चलाऊंगा, लेकिन prod में अगर मुझे कुछ चलाना है तो prod के configuration pass करूंगा. Yes or no? I cannot fix right my configuration value in main code. तो मैं उसको कहाँ पे रखूंगा? Segregate करके config file में रखूंगा. Yes or no? So that as per environment, as per right need, right, I can use that value or change that value, so that my code right is not in a hard coded way कि मेरे को प्रोडक्शन में जाने के पहले जाके कोड चेंज करना पड़े, राइट, या कहीं पे कुछ रन करने से पहले कोड में जाके चेंज करना पड़े. इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मेरा कॉन्फ़िग में चेंज मारूंगा और मल्टीपल कॉन्फ़िग बना के रखूंगा और वो कॉन्फ़िग यूज करूंगा राइट एज पर माय राइट रिक्वायरमेंट. यू गॉट माय पॉइंट, राजीव? Yes. Yeah, that's where right this is there. Any more questions? Deepak, CAAC stands for code as a Configuration as a code. configuration. Okay, so we discussed initially, right? There's a difference. Provisioning generally right deals with infrastructure, right? So infrastructure code is generally meant for right provisioning of servers and right passing parameter right for creating those servers or infrastructure like VPC, load balancer, right, auto scaling. These are related to right infrastructure. But when we deploy or right want to tweak the performance of server, we want to change the actual configuration right of a particular application or right or server, then right we generally use terminology configuration as code. So this difference we should be aware of. But generally right हम लोग एक ही terminology use करते हैं हर जगह. हम बोलते हैं infrastructure as a code, because by saying that right we are actually also considering configuration as a code. Got it, Sumit? Yes. Then. Okay, now I will basically do one thing. Let's do Ansible right installation and right basically do something. Sir, hello. Yes, Rajiv. Deepak, your voice is not proper. That's what I'm saying, right? Internet is. Sir, I was one question. Yep, bolo Rajiv. Go ahead, Rajiv. Go ahead. Sir, as you told that we mentioned all the nodes in inventory file where we want to execute our code. So suppose if we have n number of 1,000 nodes where we want to execute our code, so we need to add every node in that file. So let me answer this question. I got your question. So say this is my inventory file, and inventory file I have something called right web, okay, server section, right, and then I have a DB section. I'm just giving an example how right a static inventory looks like. Okay. Now when I want to give right 100 or 1,000 of hosts, right, see first of all right we can give the value in section. I can give an IP also, right, 10.1.0.20. say this is the IP of remote machine, or I can give a host name also, right, like www. right web
server, right, .com, right, something like that. This is also, right, a host name, right? Basically I can give this also, or I can write, if I have 1,000, right, so I will have use some naming convention, right, like web server, right? And here, right, 0 dash, right, 99999, right, .com. Now you got my point. In a single line I am defining a range. Yes, yes. In that way I can achieve. So you wrote there web server and DB. That is called like group. So these are groups basically, or sections, right? So all the web server are part of this section, right? DB would have, right, something called, right, www dot, right, webdb, right, .com, say, right? So these are different hosts, right? Yes, yes. You got my point, So, Rajiv? yeah, there is no module like that कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन के सारे नोड्स को ऐड करना है कर सकते हैं, तो उसमें स्टैटिक इन्वेंटरी की जगह कंसेप्ट किसका आ जाएगा? डायनेमिक इन्वेंटरी. So difference between static inventory and dynamic सॉरी inventory सॉरी is सर what? वॉइस Yeah, today internet is very bad, so I will not try to continue more, but I will take this caution, and after that, right, I will tell you that today we will stop, because I think it's not going to help us, right, in terms of learning. तो आज हम class नहीं करेंगे, ठीक है, everyone? But let me answer this question, Rajiv. I'm audible, first of all. यस यस Okay. So I mean to say that there is a concept called dynamic inventory. Dynamic inventory, right, is calculated when your infrastructure which you are using, right, has APIs, service APIs, so that you can runtime calculate, right, where you want to do anything. Okay. So obviously dynamic inventory would be what? A code, a script, through which you will call what? The code, and fetch the information that you want at the runtime, to deal with any kind of, right, host or any machine, right? You can at runtime calculate and do the execution. So that solves the problem, right? What you are saying, Rajiv. Okay, that means we need to write that type of code and it will calculate all the domain Yeah. specific So users. yes. So for example, I in case of AWS, there is already pre-written code which I will take you to the lab, right? जब मैं आपको डायनेमिक इन्वेंटरी बताऊंगा, एक कोड है, आप भी सर्च कर सकते हो, EC.py, जो बोटो लाइब्रेरी पे बेस्ड है. इट इज अ वेरी ओपन सोर्स कोड, कहीं कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो. आप उसको जब रन करोगे, वो पूरा का पूरा, राइट, जिस अकाउंट पे आपने ऑथेंटिकेशन दिया, उस अकाउंट के सारे EC2 सर्विस रिलेटेड कंपोनेंट से वो बात कर सकता है. आप फिल्टर लगा सकते हो, फेच कर सकते हो यूजिंग, राइट, दैट नेम टैग, है ना? तो ऑब्वियसली नेम टैग में क्या होगा? आपके सारे जो डोमेन, इस तरह से आप टैगिंग कर सकते हो, राइट, आपके होस्ट को. तो आप एक टैग दोगे और टैग बेसिस पे क्या करोगे? सारे डिटेल्स निकाल सकते हो, specific to a particular domain or specific to whatever the way you are tagging or implementing your solution. You got my point, Rajiv? यस सर गॉट योर पॉइंट बट एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर वो स्पेसिफिक डोमेन के जो यूजर्स हैं उनके ऊपर कोड को जाके एग्जीक्यूट करेगा तो उसके लिए उसको ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी. Obviously, and that's a valid question. Or Ansible क्या करता है? Ansible uses SSH to do that, right? So you have to set up, right, to all those machines, right, and SSH communication, either using private key, either using public key, or password with username password, or right, a passwordless connection using keys. आपको जब आप सेटअप करोगे, तो एक होस्ट को सारे, राइट, परमिशंस होने चाहिए कि उस नेटवर्क के सारे मशीन से कनेक्ट कर पाए over SSH. That's what we will do, right, while doing our first, right, setup. जब हम ad hoc command run करेंगे, तो हम लोग passwordless connection करेंगे दो मशीन के बीच में, ठीक है? Hi, Deepak. Master One versus. question. Yes, Priyesh. Yeah. So actually, Deepak, initially we had discussed regarding Boto library for programming and all those things. Correct. So I mean, in real time, which is used like Terraform or Boto library, or how this is related? I mean, actually, I got confused with those Boto 3 libraries using Python as well as this tool. Correct. Let me tell you. See, Boto 3 is AWS specific library, first of all. Okay. Sir, can you just repeat this question once because I didn't know. Which question?
which Priyesh asked. Okay, Prish asked, he's confused, right? When he when he heard Terraform also, and right, we already also have talked about, right, as a Boto library. So where it is basically used, right? With what Terraform also it is used, or right what? So you have to understand first of all, Boto library is AWS library for AWS, right? Service APIs. It exposes what? AWS Service API. So if you are writing a code or script, right, and you want to interact with AWS Service API, you use Boto library, irrespective of what configuration management tool you use. Okay, Priyesh? First of all, Okay. this should be clear. For example, if I want to do something related to Terraform already, right, without using Boto library, already have a provider written, and they have already in Go language, in Go core language, they have already write all the right respective information or module written, right, like AWS instance, which internally uses their code to interact with AWS. So they are not using what? Boto library at all, right? Terraform while communicating to AWS. Is this clear? Is Yes, this yes, clear? okay. Now, using Terraform, if I want to do certain service orchestration or some implementation through Terraform, I can run an Ansible playbook also. Okay. Got my point? And Ansible might use what? Boto library to do something, right? In that way, right, it will may come in picture. But Terraform doesn't uses Boto library, first of all, right? Terraform is on, right, a way of, right, interacting with AWS services or resources. And yes, Okay. in case So, of Ansible, yes, we use Boto library. okay. So, I mean, first of all, I mean, we need to go through those Boto thing. First, we need to learn all those Ansible and Terraform thing, and in between, if required, we can use Boto library in real time. Obviously, so Boto is So, what is is my your understanding something, clear? if you know, yeah, you're correct, Presh. So Boto is nothing but what, if you know Python, right? If you know Python, obviously you can do what? You can import that Boto Mhm. library and use the documentation of Boto for specific AWS services to deal with them. Correct? Okay. है ना? तो अगर आपको कुछ Yeah. ऑटोमेशन Got it. करना है और आपको मान लो S3 बकेट पे फाइल अपलोड करनी है, क्रिएट करनी है, for example, writing an Ansible playbook which run a script, and that script basically creates, right, S3 bucket. तो आप क्या कर रहे हो? Ansible का स्क्रिप्ट मॉड्यूल यूज कर रहे हो और आप एक राइट पाइथन स्क्रिप्ट कॉल कर रहे हो, और वो पाइथन स्क्रिप्ट में आपने बोटो लाइब्रेरी यूज करके, राइट, S3 से इंटरेक्शन किया है. तो दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कुड बी देयर. You got Okay. my point? Yes. Yes. You are right in terms of, right, yes, how you can, you see, keep Ansible as a configuration management tool for which your coding is abstract for you. You are not going to code, you are using the code, right? You are just placing them, right? Now doing automation, sometime you need to, right, do some coding or interact with AWS service. At that time, right, you might use, right, Boto library. Okay, Okay. Got it. Yes. right. Okay, guys, And yes, Presh, go ahead. last question. Regarding Ansible, you showed us like how commands and other modules specifically. So, Mhm. do we need to learn from interview perspective for all the modules, or how No. should we? Answer is no. Some specific popular things that you have to learn, right? For example, for doing any automation related to running script, right, right. All this which would be important, right? Like right, how you can execute script in how thousand of machine which you keep, right, in a, right, remote machine, और वो script सब जगह run होना चाहिए. एक तो ये, दूसरा आपको web server implementation, right? वेब सर्वर इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन, उस तरह के मॉड्यूल कैसे आप इंस्टॉल करोगे एक वेब सर्वर को मशीन पे. तो ऑब्वियसली सर्वर मॉड्यूल्स लाइक एपीटी यम जो है, राइट, जो एंसिबल ने लिखे, Okay. वो सीखना चाहिए. और प्रोविजनिंग का सीखना चाहिए, जैसे कि आप कैसे, राइट, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं. कोई एक एग्जांपल ऐसा, राइट, जो आप बता सकते हो कि वी कैन डू प्रोविजनिंग, वी कैन डू कॉन्फ़िगरेशन, राइट, यू राइटिंग प्लेबुक. ठीक है, तो उस तरह का अप्रोच रखना पड़ेगा. आई डोंट गो रीडिंग इन डीप ईच एंड एवरी मॉड्यूल. एनीवे, राइट, यू आर नॉट गोइंग टू यूज एवरी मॉड्यूल, राइट, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. वहां पे Correct. जाओगे तो आप गिन के 4 या 5 मॉड्यूल से डील कर रहे हो और कुछ ऐड कर रहे हो एज पर योर पीओसी एंड एवरीथिंग, राइट. तो दैट इज लर्निंग एज पर द वर्क. ठीक है. Last question from my side. Yes, go ahead. There is no last question. I will take questions जब तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हाँ बोलो राजीव.
things are written in this inventory file. Rajiv, So- I'm not able to hear you. I missed a lot of words, maybe, right? I would say, yeah. Can you repeat Sir, am again? I audible now? Yes, you are. So जैसा आपने कहा कि इन्वेंटरी फाइल में मीन्स ग्रुप एंड नोट्स एंड ऑल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो इन्वेंटरी फाइल की इंफॉर्मेशन है, हाँ मतलब ये इन्वेंटरी फाइल भी कहीं से कनेक्ट होगी, मीन्स इसको भी कहीं कॉल किया जा रहा है. बिल्कुल. तो देखो, दो चीजें हैं, राइट. जो अगर स्टैटिक इन्वेंटरी की बात करते हैं तो एक होता है डिफॉल्ट इन्वेंटरी. जब आप एंसिबल इंस्टॉल करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि डिफॉल्ट इन्वेंटरी कहाँ रहता है. वो जनरली आपके रहता है etc एंसिबल होस्ट करके फाइल रहती है, राइट. तो अगर आप पास नहीं करते हो इन्वेंटरी फाइल तो वो वहां का ही फाइल यूज करता है. लेकिन जो मैंने कमांड लिखा था आपको, राइट, वेयर आई हैव रिटन, मैंने मिटा दिया, राइट. तो मैं स्पेसिफिकली खुद की कोई भी एक प्लेन टेक्स्ट इन्वेंटरी फाइल बना सकता हूँ और एंसिबल कमांड को रन करते वक्त या एंसिबल प्लेबुक कमांड को रन करते वक्त -i फ्लैग के साथ मेरा खुद का बनाया हुआ इन्वेंटरी फाइल दे सकता हूँ. तो उसको मिल जाएगा. वो पाथ आपका कहाँ पे, वो आप डिफाइन कर सकते हो. एब्सोल्यूट रिलेटिव पाथ जो भी दे सकते हो. तो ये जो -i फ्लैग है ना, इसको आप पास करते हो आइदर रनिंग एंसिबल प्लेबुक और एंसिबल एडहॉक कमांड यूजिंग एंसिबल कमांड -i फ्लैग एंड योर इन्वेंटरी नेम. ठीक है. तो वो इन्वेंटरी नेम -i फ्लैग जो दे रहे हो, आप बता रहे हो एंसिबल प्लेबुक को कि भाई ये इन्वेंटरी फाइल यूज करना अपना प्लेबुक .yml को रन करने के लिए. ठीक है. और दूसरा यहाँ पे ये बोल रहा है एडहॉक कमांड में ये मॉड्यूल यूज करना. ठीक है. apt, राइट, अपना ये पैकेज इंस्टॉल करने के लिए नेम इक्वल टू से apache 2. ठीक है. एंड देयर सर्टेन अदर आर्गुमेंट्स. तो अभी ऊपर वाला कमांड क्या कर रहा है, इन्वेंटरी में जो भी होस्ट है, राइट, ऑब्वियसली वो यूनिक्स होस्ट होने चाहिए पहली बात, क्योंकि मैं आप मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, मतलब यूबुंटू होस्ट होने चाहिए. तो उसमें मैं क्या क्या इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, apache 2 वेब सर्वर. ठीक है. यूजिंग apt मॉड्यूल, राइट. और नीचे में क्या है, प्लेबुक जो भी रन होगा वो कौन सा इन्वेंटरी यूज करेगा, सारे होस्ट जो इस -i इन्वेंटरी नेम को. और प्लेबुक YAML में मैं बोलूंगा कौन से सेक्शन पे जाके काम करना है. वहां पे मेरा एक होस्ट कीवर्ड होगा जो मैं आपको प्लेबुक समझाऊंगा. तो उस होस्ट कीवर्ड में वो सेक्शन नेम दूंगा. तो इन्वेंटरी के उस सेक्शन के जितने होस्ट है उसमें जाके सारे एक्शंस करेगा जो मैंने प्लेबुक में लिखा होगा. ठीक है. गॉट इट राजीव? Yes, got it. Okay, guys, I think if you have any question you can ask, else I will not continue because voice are breaking, maybe, right, it will not pass on in the proper way. So I will stop here today. ठीक है. हम लोग जब सही रहेगा तो ही करते हैं, rather than right half आधा अधूरा चीज सही नहीं रहेगा. ठीक है. any query, question, anyone? Last questions if anyone want to take. Okay, then let's wind up and meet next, right? You can say Saturday. Okay. You can read about, right, I would say, right, just read about inventories like static inventory versus dynamic inventory. क्वेश्चन में काफी आता है. एंड agent less nature of Ansible, right, why, right, they have a solution like agentless, why they want to, right, be a agentless. तो ये सब चीजों के बारे में थोड़ा स्टडी करो, कुछ, right, पढ़ो, तो you will get more clarity, right. So जो हम आगे implementation करेंगे, right, installation and right lab जो हम करेंगे उसमें आपको काफी कुछ clear होगा. And frankly speaking it's the most easiest tool, right, to have in your resume, राइट. सबसे इजी टूल है, राइट. इजीली आपको समझ में आ जाएगा. इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बता सकते हो, कोई इसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत ही कम है. तो आई वुड से, राइट, जो इस तरह के टूल है उसको ज्यादा पकड़ो, राइट, उसको रिज्यूमे में ज्यादा हाईलाइट करो, और विच इज ऑल्सो पॉपुलर. और ऐसा भी नहीं है कि वो पॉपुलर नहीं है. ठीक है. तो स्ट्रेस मोर ऑन, राइट, दिस काइंड ऑफ टूल्स. ओके, थैंक यू एवरीवन. Bye. बाय. Thank you. Bye. Thank you.